Hello friends, कैसे हैं आप सभी? So today we are going to start our new chapter, that is the president. So let us see of some of the information that is mentioned and then we will solve the questions. Now the president is the head of Indian state. एक बात याद रखना, president is the nominal head of the Indian state, whereas real head is the prime minister, which carries on the executive functions with the help of his cabinet. ठीक है, and the council of minister aids and advise the president on various matters. ठीक है, so there shall be president of India. It is mentioned in article 52. According to 53, the executive power of the union shall be vested in the president and shall be exercised by him either directly or through various officers subordinate to him. According to article 54, the president shall be elected by, so the electoral collage of the president contains the elected members of Lok Sabha plus Rajya Sabha, that is the parliament, elected members of state legislative assembly. ये ध्यान रखना, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है सिर्फ, नॉट द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, एंड द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द legislative assemblies of two union territories, that is Delhi and Puducherry. Now this provision was added by 70th amendment, constitutional amendment. ठीक है, यहाँ देखो आगे दिया भी है, तो 70th amendment provided for the inclusion of members of legislative assembly of NCT of Delhi and Puducherry in the electoral collage. Now nominated members, those who are nominated by the president, these do not take part in the election of president. Also members of legislative council also do not take part, but these both, मतलब कि nominated members and member of legislative council, these all take part in the impeachment of president. ठीक है, ये this is an important fact, याद रखना. Now the election is held in accordance with the system of proportional representation by the way of single transferable vote. Two types of elections होते हैं इंडिया में, that is direct elections, that is one is direct, other one is indirect. Indirect में the public directly goes out to vote. For example, लोकसभा के elections के लिए जब voting होती है, there is voting for the state elections, पंचायत elections. Whereas indirectly में the public does not vote directly, but public ने जो अपने representatives भेजे हैं लोकसभा में, राज्यसभा में, स्टेट असेंबलीज में, पंचायत में, these elect different members in the indirect voting. तो प्रेसिडेंट के लिए indirect voting होती है, वाइस प्रेसिडेंट के लिए indirect voting होती है, ये ध्यान रखना. Now क्राइटेरिया क्या है, 35 years of age होना चाहिए मिनिमम, एंड क्वालिफाइड फॉर द इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ हाउस ऑफ पीपल, दैट इज़ लोकसभा. एंड वाइस प्रेसिडेंट की भी एज 35 होती है, एंड ही और शी मस्ट बी क्वालिफाइड टू बी द मेंबर ऑफ राज्यसभा. और 50 इलेक्टर्स होने चाहिए एंड 50 प्रपोजर्स होने चाहिए. नाउ द कैंडिडेट हु फेल्स टू सिक्योर 1/6 ऑफ द वोट, उनका जो सिक्योरिटी अमाउंट होता है 15,000 का, दैट इज़ नॉट रिटर्न बैक. नाउ द प्रेसिडेंट सबमिट रेजिग्नेशन टू द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एंड देन वाइस प्रेसिडेंट जो है वो रेजिग्नेशन को कम्युनिकेट करेगा स्पीकर ऑफ द हाउस, स्पीकर ऑफ द लोकसभा के पास. नाउ फर्दर ही कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस थ्रू द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट. The only thing that is mentioned in constitution about the impeachment is कौन सा ग्राउंड हो सकता है, तो that is the violation of constitution is the only ground जिसमें कि president impeach किए जा सकते हैं. Now जब vacancy is there on the part of death, resignation, removal, ठीक है, then the vice president acts as the president until new elections are held, and elections are to be held as soon as possible, या within 6 months बोल लो. जबकि when there is vacancy on the part of illness या president इंडिया के बाहर गए हैं, then the vice president acts as the president of India till
the president comes back. जब भी प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों ना हो, देन द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक्ट्स एज द प्रेसिडेंट, एंड देन जब चीफ जस्टिस भी ना हो, देन द सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एक्ट्स एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ना प्रेसिडेंट की ओथ को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एडमिनिस्टर करते हैं. ठीक है. करेंट सैलरी ऑफ प्रेसिडेंट इज़ 5 मंथ एंड इट इज़ पेड इन द फॉर्म ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. नाउ प्रेसिडेंट की डिफरेंट पावर्स होती हैं. प्रेसिडेंट हैज़ एग्जीक्यूटिव पावर ऑल्सो, लेजिस्लेटिव पावर ऑल्सो. ठीक है. जुडिशियल पावर भी होती हैं. मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ. फॉर एग्जांपल एग्जीक्यूटिव पावर का मतलब है कि ऑल दी डिसीजंस और एक्ट्स दैट आर मेड ऑन हिज नेम. ठीक है. मेड ऑन द प्रेसिडेंट्स नेम. नाउ देन प्राइम मिनिस्टर को प्रेसिडेंट ऑर्डर करता है टू गिव द इंफॉर्मेशन whatsoever demanded by the president. President then टर्म्स ऑफ रेफरेंस TOR भी जिसको बोलते हैं, वो देता है फाइनेंस कमीशन को, फाइनेंशियल प्रोप्राइटरी के, कि आपको जब भी टैक्स का डिवोल्यूशन तय करना है या डिसाइड करना है, देन व्हाट ऑल टर्म्स ऑफ रेफरेंस यू कैन यूज़. प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन करता है. ऑल्सो अंडर द आर्टिकल 1 to 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द प्रेसिडेंट कैन इशू ऑर्डिनेंस. ठीक है. ऑर्डिनेंस इशू करते हैं प्रेसिडेंट हमारे, जिसको बाद में जब भी लोकसभा या राज्यसभा या दोनों हाउस वापस से कंटिन्यूएशन में आएंगे, दे हैव टू अप्रूव इट. ऑल्सो प्रेसिडेंट समन्स द जॉइंट सिटिंग अंडर आर्टिकल 108 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें डेडलॉक हो जाता है लोकसभा एंड राज्यसभा के बीच. देन प्रेसिडेंट समन्स द जॉइंट सिटिंग विच इज़ हेडेड बाय द स्पीकर ऑफ द हाउस टू रिजॉल्व दिस डेडलॉक, एंड इट इज़ मेड ऑन ऑर्डिनरी बिल ओनली. ठीक है. ये सब मैं आगे सब्सिक्वेंट चैप्टर्स में बताऊंगा इसकी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन. थोड़ी चीज़ें आप याद रखो. सो प्रेसिडेंट जब ये एक्सेंट नहीं देगा, देन जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी बिल लेके आएगी, इट विल बी कॉल्ड बिल. आफ्टर द assent is given by the president, the bill becomes act. Now ये तो मैंने बता ही दिया. ऑल्सो ही इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेज, तीनों फोर्सेज आते हैं, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स. ही इज़ द हेड. 42nd अमेंडमेंट से मेड अ प्रोविजन दैट द प्रेसिडेंट इज बाउंड बाय द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर. ठीक है. आर्टिकल ये 44th अमेंडमेंट से इट ऑथराइज द प्रेसिडेंट टू इंक्वायर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू रिकन्सिडर सच एडवाइस. ठीक है. एंड दिस प्रोविजन वाज एडेड आफ्टर द इमरजेंसी 1975 में. इमरजेंसी के टाइम पे बहुत मिसयूज़ हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन का. देन इन 1976 फर्दर अमेंडमेंट्स वेयर मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके बाद में कंट्रोल वॉज टाइटेंड कि प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से एक्ट नहीं कर सकता, विच वॉज मेड टू डू सो ड्यूरिंग द इमरजेंसी पीरियड के. नाउ लेट्स सॉल्व द क्वेश्चंस. The union executive is headed by the president and there is no limitation on the power of president. So A1 is true but R is false, क्योंकि अभी मैंने बताया 1975 में emergency के बाद 1976 में there was an amendment to the constitution that was the 44th amendment, जिसके बाद there was certain limitations on the power of the president. So C is the right answer. How the president is elected in India? So by indirect elections. एक बार यहाँ पे देखना, ध्यान से याद हो जाएगा. इट कंटेन्स इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा प्लस राज्यसभा, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली प्लस पौंडीचेरी. ठीक है. लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स का कोई रोल नहीं होता, नीदर नॉमिनेटेड मेंबर्स के का कोई रोल होता है. Now the 2 union territories which have been given right to take part in the election of the president
by the 70th amendment of Indian Constitution are Delhi and Pondicherry. The President of India is indirectly elected, बिल्कुल सही बात है, through the process of single transferable vote. The provision of electoral college consists of elected members of the both houses of parliament and elected members of the legislative assembly of states. So this is true. C is the right answer. In India, the president is elected by single transferable vote system and proportional vote system. Now, the electoral college of the president consists of elected members of the both houses of the parliament, correct. Elected members of the both houses of state legislature, wrong. Legislative council का कोई रोल नहीं होता. Elected members of the legislative assembly of all states, so this is also wrong. Not all state, but sorry, this is right. ठीक है, all UTs नहीं होती हैं, ये ध्यान रखना. And elected member of legislative assemblies of Delhi and Pondicherry, this is right. So 1, 3 and 4 is right. Who among the following are not included in the electoral college for the elections of the president? So अभी मैंने बताया elected members of the legislative council is not included. Which of the following are the members of the electoral college for electing the president of India? So these are all the members of the two house of parliament. No, this is not true. All नहीं, only elected members हैं. Now all the elected members of the state legislative assembly, 2 हमारा सही है. All the elected members of the UT assemblies, 3 तो बिल्कुल गलत है, 3 को यहाँ से हम wrong कर देंगे. And all governors LT and lieutenant governor and governors का तो कोई रोल ही नहीं है. यहाँ पे all नहीं होगा, elected होगा, that is why ये disputed है. ये गलत ही है, all नहीं होगा, elected होगा. So only 2 will be the right answer, which is not mentioned in the options. Now the member of the board of elections of the president are elected member of Lok Sabha, true. Elected members of Rajya Sabha, true. Elected members of Vidhan Sabha, true. And elected member of Vidhan Parishad. Vidhan Sabha is legislative assembly, whereas Vidhan Parishad is legislative council. So 1, 2, 3 are true. So C is the right answer. The president of India is elected by the only the members of Rajya Sabha, wrong. Only the members of Lok Sabha, wrong. Only the members of state legislative assembly and Lok Sabha, wrong. By the elected members of the Rajya Sabha, Lok Sabha and legislative assembly. So D is the right answer. President of India is elected by the members of parliament and members of state legislative assemblies. Electoral college for the elections of the president of India consists of, so all the elected members of the both houses of the parliament, elected members of the state legislative assembly. D is the right answer. Now next question. Which of the following is not correct regarding presidential election? Now not correct statement हमें find करना है. Election of the successor must be held before the expiry of the term of the incumbent president, बिल्कुल सही. President shall hold office for the terms of 5 years from the date on which he enters upon his office, बिल्कुल correct है. On the expiration of his term, he continues to hold office unless the successor enters upon, right? President election may be postponed on the ground that the electoral college is incomplete. This is wrong. It cannot be declared or postponed on the grounds of incomplete collage. Incomplete collage का मतलब है कि members, हमारे पास members की proper संख्या नहीं है to conduct the elections of the president. So इस ground पे the election cannot be postponed. The minimum numbers of electors needed to be proposers. So 50 electors are needed and 50 proposers are needed. So कोई भी option इसमें से नहीं है, तो this is a disputed one. That is why it is wrong. Now in the electoral college of the presidential election, the value of the vote of an elected member of legislative assembly equals state population divided by the number of elected members of the state assembly into 100. This is the formula. ठीक है. There were more than 5,000 voters in the latest election. तो ये वो उस टाइम के 2003 के IAS का क्वेश्चन है.
इसका आंसर आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बट इसकी इन्फॉर्मेशन आपके लिए ज़रूर इम्पोर्टेंट है. सो हमारा सेकेंड स्टेटमेंट सही है, दैट द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एन इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इक्वल्स द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द इलेक्टेड एमएलएज इज डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड एमपीज. एंड यहाँ पे जो 100 की वैल्यू से मल्टीप्लाई किया ना, ये 100 नहीं है बल्कि 1000 से मल्टीप्लाई होता है. Now, with reference to elections of the President of India, consider the statement. The value of each vote of MLA varies from the state to state. बिल्कुल सही. The value of vote of MP of the Lok Sabha is more than the value of MP of the Rajya Sabha. This is wrong. Values of vote बिल्कुल सेम होते हैं, ठीक है, वैल्यू में डिफरेंस नहीं होता. The Chief Minister of a state in India is not eligible to vote in presidential election when. तो एक ध्यान करना कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन से वोट कर सकते हैं. तो हमें पता है इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा प्लस राज्यसभा, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ 2 यूटीज़ हमारी दिल्ली एंड पुदुचेरी. लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं का कोई रोल नहीं है. तो ऑब्वियसली जब सीएम हमारा लेजिस्लेटिव काउंसिल से होगा तभी तो वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट नहीं कर सकता है. तो बस देख लो ऑप्शंस में, ही द कैंडिडेट बिल्कुल वोट कर सकता है. ही इज़ येट टू प्रूव हिज मेजॉरिटी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर. बिल्कुल इसका कोई सेंस ही नहीं है. ही इज़ द मेंबर ऑफ अपर हाउस. बिल्कुल सही है, अपर हाउस मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल. ध्यान रखना, अपर हाउस इज़ राज्यसभा या लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट, वेयरएज लोअर हाउस इज़ लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली. नाउ इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, ये 1997 का क्वेश्चन है, अभी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एसेंशियल क्वालिफिकेशन. completion of 35, this is an essential. Educated, qualified for election as a member of people, citizen of India. ठीक है, so education is not an essential qualification, ध्यान रखना है इसको. ठीक है, सिटीज़न ऑफ इंडिया का कंपल्शन नहीं है, ये भी ध्यान रखना. सिर्फ सिटीज़न नहीं बल्कि नेचुरलाइज सिटीज़न, मतलब जो बाहर जिनका जन्म हुआ है बट उसके बाद दे आर दी सिटीजन्स ऑफ इंडिया, दे कैन ऑल्सो बी द प्रेसिडेंट इन इंडिया. ठीक है, बर्थ एक फैक्टर नहीं है. सो एडुकेशन होना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर आवर प्रेसिडेंट. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ही शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया बाई बर्थ. अभी बताया मैंने, बर्थ इज़ नॉट अ कंडीशन. ही शुड हैव completed एज ऑफ 35. करेक्ट. ही शुड बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. सो दिस इज़ नॉट करेक्ट. पार्लियामेंट से उसका कोई लेना देना नहीं है. लेजिस्लेटिव क्या कहते हैं, लोअर हाउस, यानी कि लोकसभा के मेंबर होने के लिए ही और शी मस्ट बी क्वालिफाइड. पार्लियामेंट एज अ होल नहीं. सो बी इज़ द राइट आंसर. A member of the parliament or state legislature can be elected of the president, but he will have to relinquish his seat soon as he is elected. President बनने के बाद he or she will have to leave his seat of the state legislature. Then only he or she can become the president. Now, which article of the Constitution prescribe eligibility condition for the de-election to the post of president? So it is provided in the article 57. Next question is, if there is any dispute regarding the presidential election, it can be referred to. So it is referred to the Supreme Court of India. Also vice president के election के regarding कोई भी dispute होता है, that too is dealt by the Supreme Court only. Which of the following president was appeared before Supreme Court when the Supreme Court was hearing election dispute of the president? So it was V.V. Giri. President hold office for a term of 5 years from the date on which he enters upon his office. To whom does the president address his resignation? To the vice president. President submits his resignation to the vice president. President can remove from his post by the parliament through the process of impeachment.
Under which of the article of the constitution can president be impeached? तो it is article 61. 356 तो हमारा president rule का है. Which of the following articles of Indian constitution deals with the impeachment? 61. Again impeachment is mentioned in 61. President of India can be removed from his office even before the expiry of the term through impeachment. By which house of the parliament impeachment can be imposed on the president? Any house of the parliament can instigate या can start the impeachment process. Although एक चीज़ याद रखना, मनी बिल के केस में ओनली लोकसभा कैन इनिशिएट अ मनी बिल. सिर्फ लोकसभा से स्टार्ट होता है. राज्यसभा के पास सिर्फ रिकमेंडेटरी पावर्स होती हैं. रिकमेंड कर सकता है चेंज, बट लोकसभा अंडर हैज़ नो प्रेशर फ्रॉम द राज्यसभा. मतलब राज्यसभा अंडर नो कंडीशन कैन प्रेशराइज लोकसभा टू एक्सेप्ट द डिमांड्स that is made by Rajya Sabha. Money bill is mentioned in Article 110 and it is presented in the parliament with the prior consent of the president. ये आगे के चैप्टर्स में कवर करेंगे हम. Now, which of the following has power to initiate the motion of impeachment? सॉरी, मेरे ख्याल से हाँ ठीक है, इधर का तो हो गया. Now, the president can be impeached on the grounds of violating the constitution by the two houses of parliament. At least how many days of prior notice is required for the impeachment of the president? So 14 days of prior notice is needed. Which of the following is the part of electoral college of president but not a process of impeachment? So legislative assemblies are the part. Lok Sabha, Rajya Sabha, legislative council. Information देख लेते हैं. The impeachment is mentioned in Article 61. Members of state legislative assemblies do not participate in the process of impeachment, although they take part in the process of the election. Now, the procedure of impeachment of president is a quasi-judicial process. The vacant post of president is to be filled within, मैंने बताया था, 6 months. Now, in case of a vacancy arising from any other cause other than the expiry of the term of president, the vacancy must be held within 6 months from the date of occurrence. The deadline to fill the occurrence of vacancy due to death, resignation and removal of president is 6 months. ये वही 6 months वाला क्वेश्चन वैकेंसी का क्वेश्चन है. रेजिग्नेशन, हु विल ऑक्यूपाई दैट पोस्ट. द प्रेसिडेंट अगर वेकेंट कर देता है सीट को ड्यू टू हिज डेथ, रेजिग्नेशन, देन द सीट इज टेकन बाय द वाइस प्रेसिडेंट. In case the post of president fall vacant, there is no vice president, then who will take that post? It will be taken by the Chief Justice of the Supreme Court. The position of vice president, president and vice president are vacant. Officiate कौन करेगा? Chief Justice. Again same question, Chief Justice. Executive head of the state कौन है? President. Under Article 53, all the decisions are taken on the name of president. Executive power of the Union and President mentioned in Article 53. Executive power of Indian Constitution, President. Executive power of central government, President. The executive power of the Union is vested in the President. The executive power is concerned with carrying on the business of the government. A is the right answer, as both the A and R is true, and R is the correct reason for the assertion. Now, करेक्ट आंसर्स हमें सेलेक्ट करने. एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन इज वेस्टेड इन द प्राइम मिनिस्टर. रॉन्ग. अंडर आर्टिकल 53 इट इज़ मैंशनड दैट इट इज़ अंडर द प्रेसिडेंट. तो 1 हम कैंसिल ही कर देंगे यहाँ पे. डायरेक्टली हमारा 2, 3, 4 आंसर आ गया. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइज इज पावर इधर डायरेक्टली और थ्रू ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू हिम, एंड देयर इज अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड प्लस एडवाइज द president. Question 54. The president is a part of parliament. पार्लियामेंट के हमारे 3 पार्ट हैं, बता देता हूँ आपको. देयर इज़ लोकसभा, देयर इज़ राज्यसभा एंड देयर इज़ प्रेसिडेंट. अब आप बोलोगे कि पार्लियामेंट का क्या पार्ट कैसे हो सकते हैं, क्योंकि पार्लियामेंट में तो प्रेसिडेंट हमारे बैठते ही नहीं बैठते हैं. दैट इज़ ट्रू, बट कोई भी बिल
हमारा एक्ट नहीं बन सकता है विदाउट द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। सो बिल हमारा एक्ट सिर्फ प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन, प्रेसिडेंट के एसेंट के बाद ही मिलेगा। दैट इज़ वाई प्रेसिडेंट इज़ द इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर पार्लियामेंट्री सिस्टम। हेड ऑफ इंडियन रिपब्लिक कौन होता है? तो इज़ द प्रेसिडेंट। कौन से अमेंडमेंट के बाद द प्रेसिडेंट कैन सेंड बैक द मैटर फॉर रिकन्सिडरेशन बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर? इट इज़ बाय द 44th अमेंडमेंट एक्ट 1976। प्रेसिडेंट अगर कोई भी चीज़ की रिकन्सिडरेशन भेजता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कि भाई आप वापस से सोच के भेजो कि आपने सही किया है या नहीं, और देन अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वही एडवाइस को वापस प्रेसिडेंट को भेजता है तो प्रेसिडेंट इज़ बाउंड टू एक्सेप्ट। प्रेसिडेंट दोबारा रिकन्सिडरेशन के लिए नहीं भेज सकते। तो प्रेसिडेंट इज़ बाउंड टू एक्सेप्ट द रिकन्सिडर्ड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये एक फैक्ट याद रखना है। प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व लोकसभा ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ यूनियन कैबिनेट। मैंने बताया भी देयर इज़ अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस। खुद से डिसीजन नहीं ले सकते प्रेसिडेंट। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन डिसॉल्व द लोकसभा ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कैबिनेट। और वर्ड कैबिनेट इज़ मैंशन ओनली वन टाइम, एक टाइम मेंशन किया गया है आर्टिकल 352 में। द जॉइंट सिटी ऑफ द हाउस ऑफ पीपल एंड काउंसिल ऑफ स्टेट इज समन्ड बाय द प्रेसिडेंट। जॉइंट सिटिंग बाय प्रेसिडेंट, again joint sitting by president. The president of India addresses the parliament under article 87। both parliament of assemble together। दो केसेस में होता है, आफ्टर ईच जनरल इलेक्शंस के बाद प्रेसिडेंट करते हैं, और मोशन ऑफ थैंक्स हर साल के एंड में या हर साल के पहले सेशन के पहले द प्रेसिडेंट एड्रेसेस द पार्लियामेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्रेसिडेंट इज़ नॉट करेक्ट? तो ही पार्टिसिपेट्स इन द डिस्कशन। पार्लियामेंट में नहीं बैठता हमारे प्रेसिडेंट, तो बी इज़ द राइट आंसर। द ओनली इंस्टेंस व्हेन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइजेज वीटो इज़ रिलेटेड टू पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट एक्ट। डिटेल्स में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ वीटो। पॉकेट वीटो होती है, सस्पेंसिव वीटो होती है, क्वालिफाइड वीटो होती है। सो इन्फॉर्मेशन ये देख लो आप। प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अप्लाइड एब्सोल्यूट वीटो ऑन दी एडवाइस, ठीक है। एब्सोल्यूट वीटो का यूज़ किया था राजेंद्र प्रसाद ने, एंड ज्ञानी जैल सिंह ने एक्सरसाइज किया था पॉकेट वीटो का। विच आर द फॉलोइंग प्रेसिडेंट एक्सरसाइज पॉकेट वीटो? अभी बताया, ज्ञानी जैल सिंह। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट enjoys the power to withhold his assent to any bill? So it is under article 111। 1110 के अंदर there is money bill। 61 में there is impeachment of president। impeachment of president। Who amongst the following has the power to withhold assent bill? तो प्रेसिडेंट के पास पावर है। Which of the following are the discretionary power of the president? अपॉइंटमेंट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, दिस इज़ नॉट अ डिस्क्रिशनरी पावर, क्योंकि ये प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस के बाद ही होता है। तो 1 तो नॉट ट्रू है इन एनी केस। विथ टू रिटर्न अ बिल विथ ऑब्जेक्शंस, टू विथ होल्ड अ बिल इज कैन बी टू पार्डन, पार्डन की भी नहीं है। जॉइंट सेशन इज ऑल्सो नॉट डिस्क्रिशनरी पावर। अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस भी नहीं है। दैट इज़ वाई दिस क्वेश्चन इज डिस्प्यूटेड, क्योंकि नन ऑफ देम आर करेक्ट। On which matter it is not essential for president to take advice from the council of minister? So बिल्स का एसेंट देना है कि नहीं देना है, इसमें प्रेसिडेंट की को एडवाइस की ज़रूरत नहीं है। बाकी सारे केस में द प्रेसिडेंट इज़ बाउंड टू टेक द एडवाइस। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिड द प्रेसिडेंट गिव हिज असेंट टू द ऑर्डिनेंस ऑन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स व्हेन इट वाज सेंट बैक टू हिम बाय द यूनियन कैबिनेट? तो 123 के अंदर देर इज़ द ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। ऑर्डिनेंस की पावर है 123। ऑर्डिनेंस 123, जो ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट होता है वो कितने टाइम के पहले प्लेस कर देना चाहिए? तो 6 वीक। एंड द मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ एन ऑर्डिनेंस अगर वो अप्रूव ना हो इज़ 6 months एंड 6 weeks।
Which of the following is not appointed by the president? Finance Commission के chairman, vice chairman of the planning commission. This is wrong. Chief ministers of the union territory. Correct. 1 and 3 is right. Who among the following is appointed by the president? All of them. Attorney General, CAG and Governor. Who of the following is not appointed by the president? So vice president is not appointed. Vice president is elected as per Article 66. The Constitution authorizes the president to make provision for the discharge of duties of the governor. Article 160. The Indian Constitution doesn't empower the President of India with the right of appointment of Chief Minister. These are elected by the people. ठीक है, elections होते हैं state में. Which of the following article empower the President to consult Supreme Court? 143 के अंदर में the Supreme Court can help the President on the matters that is asked by him. Which of the following is incorrect about the powers of President? That the president should accept the advice of Supreme Court. This is not necessary. Compulsion नहीं होता है. According to the Constitution, which among the following is literally not a power of the president? Send messages to the House of Parliament. The President of India does not have the right to remove a judge of Supreme Court, क्योंकि इनके लिए भी impeachment process है, and it is according to the Judges Act 1968 के according है. Parliament से impeachment होता है. The power of president to grant pardon is a judicial power. Now, which of the following does not consist to pardon the president? Pardon तो है ही एक power. कौन सी नहीं है? Pardon power है, commutation power है, remission, respite, continuation और detention कोई power नहीं है. 6, 7 हमारा right answer है. Which types of authority are attributed to the President of India? That is titular, formal, de jure and constitutional and nominal. 2 and 4. Doctrine of pleasure is related to Article 310. Which of the following is not constitutional prerogative of the President? Returning bill for consideration, returning a finance bill for reconsideration. B हमारा सही है. Who prepares the President's address to the Parliament? Central Cabinet. The President of India is different from the British King. Office of Indian President is similar to that of America. बिल्कुल सही है. बिल्कुल गलत है. It is like Canada, not UK. So C हमारा right answer है. President is a part of Parliament. A bill passed by 2 houses of Parliament cannot become a law without the assent of President. बिल्कुल सही. ये हमारा right answer है. Now, the President of Independent India hailed from Bihar, Rajendra Prasad. The 4th President of India was V.V. Giri. The President of India who completed 2 successive terms was Dr. Rajendra Prasad. Who of the following was elected as President of India unanimously? Neelam Sanjeeva Reddy. The single instance of unanimous elections of the President of India so far, Neelam Sanjeeva Reddy. Now we have to match this. Fakhruddin Ali Ahmad, 1974, Neelam Sanjeeva Reddy, 1997, Zakir Hussain in 1967 and V.V. Giri in 1969. Now, who of the following before becoming the President of India did hold an office of the Vice President? That is Neelam Sanjeeva Reddy. Which of the following Indian President also served as the Speaker of Lok Sabha? Neelam Sanjeeva Reddy. Of the following President who is known as the Philosopher King or the Philosopher Ruler? That is Dr. Radhakrishnan. First President of India, Rajendra Prasad, belonged to Bihar. Which of the following President of India was also associated with trade union movement? That is V.V. Giri. Missile Man, Abul Kalam Azad. Was the following Chief Justice of India also acted as the President? That M. Hidayatullah. Who was the first to receive Bharat Ratna? Dr. Rajendra Prasad was the first one. Sorry.
Radhakrishnan was the first one. Odd one out हमें choose करना है. Jawaharlal Nehru was the prime minister, else everyone was the president of India. Which of the following is not correct? मिनिमम एज 35 होना चाहिए फॉर प्रेसिडेंट कैंडिडेट, करेक्ट है. वाइस प्रेसिडेंट इज चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, करेक्ट. वाइस प्रेसिडेंट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, दिस इज लॉ, रॉन्ग. वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड. ड्यूरिंग द टर्म ऑफ ऑफिस नो लिटिगेशन कैन बी इंस्टीट्यूटेड इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ अगेंस्ट द प्रेसिडेंट, करेक्ट. प्रेसिडेंट ऑफिस इज अबव द कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज रॉन्ग. प्रेसिडेंट क्या, कोई भी, एवरी सिटीजन इज बाउंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. सो सी इसका राइट आंसर है. आर तो हमारा गलत है ये. सिविल प्रोसीडिंग, क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं हो सकती हमारे प्रेसिडेंट के केस में, बट सिविल प्रोसीडिंग कैन बी इश्यूड 14 डेज के नोटिस देने के बाद. नाउ बिल इज प्रेजेंटेड इन पार्लियामेंट बिकम्स एन एक्ट आफ्टर द प्रेसिडेंट गिव्स हिज असेंट. द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन टू डिक्लेयर जोग्राफिकल एरिया, शेड्यूल एरियाज, तो प्रेसिडेंट के अंदर पावर है. अंडर शेड्यूल 5 और 6 के अंदर में देयर आर शेड्यूल्ड एरियाज जो कि प्रेसिडेंट डिक्लेयर करते हैं. वही क्वेश्चन हमसे पूछा है यहाँ पे. और डिस्क्रिशनरी पावर की बात की गई है, तो अपॉइंट पीएम, ये तो गलत है. समन द पार्लियामेंट, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. रिटर्न अ बिल टू द पार्लियामेंट विथ ऑब्जेक्शंस, इट इज़ अ डिस्क्रिशनरी पावर. अपॉइंट मेंबर्स ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, रॉन्ग. देखो सबसे पहले तो 4 एलिमिनेट करो. यहाँ पे हमारा 4 एक ही ऑप्शन में एलिमिनेट हुआ. डिटेन अ बिल, ये भी हमारी डिस्क्रिशनरी पावर है. आस्क अ प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर फॉर सच इन्फॉर्मेशन, बिल्कुल करेक्ट है हमारा. टू से द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फॉर रिकन्सिडरेशन और एडवाइस, बिल्कुल सही है. ये हमारा राइट आंसर है. विच ऑफ द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट इज अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन? सो adjourn the meeting of the parliament. He represent the nation but not lead the nation. So president हमारा. Which of the following president has been governor of Bihar? That is Dr. Zakir Hussain. With this we have completed our chapter of president. Kal we will start with the vice president. Thank you.